are going to start our chapter 16 and that is environmental issues. Okay, this is the last chapter of our syllabus and after this chapter we will revise each chapter by taking questions from the sample papers. So what we are going to study in this chapter, yesterday I have discussed, we are going to study about air pollution and its control. There is one case study of air pollution related with the city of Delhi, as I have already discussed कि एक टाइम पीरियड में दिल्ली जो है वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटीज हैं उसमें से एक हो गया था. And how we reduce the vehicular pollution in Delhi. That case study is given in your book that we are going to discuss. Then water pollution, what are the causes, how we prevent water pollution. Okay, however water bodies they are claimed by different guidelines that are given by our Supreme Court. ठीक है, वो सारी चीजें स्टडी करेंगे. सॉलिड वेस्ट मैंने आपको बताया था, देयर आर सो मेनी मटेरियल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम आवर हाउसेस, ऑफिसेस, ठीक है, कॉर्पोरेशंस. So all of these waste, it is made up of metals or some solid. So how we can successfully manage this type of waste? So it is known as the solid waste management. Agrochemicals, whenever we use the term agrochemicals, then we must have to be consider the pesticides, insecticides, weedicides and their effects. ठीक है बेटे, how these agrochemicals on one hand they enhance our agricultural production, but there are some harmful effects of these chemicals. As I have discussed in my yesterday's lecture, that these chemicals later become the component of the food chain. ठीक है, फूड चेन के जब ये कंपोनेंट बन जाते हैं तो इनके बहुत सारे डिलीटरियस इफेक्ट होते हैं. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी, एनिमल्स पे भी. तो हाउ कैन यू ओवरकम the effect of these chemicals? How can you minimize the use of these agrochemicals in order to prevent the water pollution? ठीक है, radioactive waste is concerned with the waste that is coming out from the nuclear reactors. Okay bete, so in modern times nuclear reactors they can act as a source of electricity. ठीक है, हमारी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी यूज कर रही हैं. बट दीज न्यूक्लियर रिएक्टर्स they generate radioactive waste and that radioactive waste they continuously emitting alpha, beta and gamma type of electromagnetic radiations. So how can we successfully manage this radioactive waste so that the effect of these radiations should not be there in the residential places that we will study. Greenhouse effect and global warming. Greenhouse effect, you can say that there is an increase in the global temperature day by day. There are so many greenhouse gases that are keeps on increasing in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane, ठीक है बेटे, वाटर वेपर्स. ये सारी गैसेस जो हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस के नेम से जानते हैं. तो वैसे वो कहते हैं कि these gases they have some beneficial effect, but nowadays because of some human activities what happened, the amount of these gases they are increasing in the atmosphere and as a result there is a global increase in the temperature. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोलर आइस कैप्स जो हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रही हैं. and because of this the level of water it rises in the oceans and that can be considered as a dangerous situation for future generations. Okay bete, so how can we nullify the effect of these greenhouse gases? How can we successfully manage or low down the effect of these gases? Ozone depletion, what are the causes? How ozone is present in the atmosphere? What are the benefits that we obtain from this gas? And how the ozone holes they are created? Okay, bete, what are the diseases that came into existence because of ozone depletion that we will study? All of you remember very well that this ozone is a blue color triatomic molecule or which is gaseous in nature and it is present in the stratosphere. ठीक है, और उसका जो है वो कहते हैं कि काफी बेनिफिट है क्योंकि ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है एंड सो मेनी केसेस ऑफ स्किन कैंसर्स कैन बी अवॉइडेड बाय दिस ओजोन लेयर. बट नाउ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है एंड पॉल्यूशन से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है. ठीक है, देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच आर नोन एज फ्री रेडिकल्स एंड दीज आर द फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन.
and they are generally causing the depletion of this gas, which is a blue color gas, ozone, and present in the stratosphere. Okay, but later on we will study about deforestation, desertification, how the normal fertile land, it later converts into the barren land or the deserts. Okay, so what are the causes of deforestation? What are the movements that are associated for protecting plants, for protecting forest? Okay, you have also studied in your 10th class. ठीक है, 10th क्लास में हमने काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स के बारे में स्टडी किया है. तो उसमें आपको याद है, वी हैव स्टडीड अबाउट द चिपको मूवमेंट, व्हिच इज आल्सो नोन एज हग द ट्री मूवमेंट. ठीक है, सो मेनी केस स्टडीज यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन. Okay, but I have already discussed what is given in the introduction, that before independence, the population of our country is in a limited amount. What happened after independence, when our people, they rule over our country? So many facilities they are provided to our citizens, and as a result, what happened? As the facilities they are given to the people of India, okay, it is related with infrastructure, medical facilities. There are advancement in the medical techniques. What happened? The mortality rate, it goes on decreasing, and as a result, the human population, it keeps on increasing at an enormous rate. So from the last 100 years, there is an enormous increase in the human population. So whenever there is an increase in the population, then what happens? ठीक है, इतने सारे लोग होंगे तो डिमांड जो है ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो कहते हैं कि वॉट एवर दे आर यूज्ड, वॉट आर दे आर बेसिक नेसेसिटीज, उसकी भी डिमांड बढ़ती है. ठीक है, फूड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस वी आर यूजिंग. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई, रोड्स हमें ज्यादा चाहिए, ऑटोमोबाइल्स जो हैं दे कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑन द रोड्स. So what is the conclusion later on? That due to increase in these demands, there is an excessive pressure on our natural resources. Okay, madam? So when there is over exploitation of our natural resources, then it later contributes to pollution. Pollution of air is there, pollution of water, pollution of land. Okay, there is one another type of pollution, and that is known as the noise pollution. ठीक है, तो पहले वो कहते हैं कि नॉइज जो है उसको पॉल्यूशन में कंसीडर नहीं किया गया था, बट लेटर ऑन द साइंटिस्ट दे कंसीडर्ड नॉइज इज आल्सो एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट. बिकॉज अगर हम वो कहते हैं कि जितनी हमारी ईयर जो है, हियरिंग एबिलिटी जो है हमारी साउंड को गेन करने की, अगर उससे ज्यादा जो है वो साउंड हो जाता है, तो दैट इज अनबियरेबल फॉर अवर ईयर ड्रम. ठीक है, तो such type of vibrations they can damage our eardrum. So noise can also be considered as a part of pollution later on. Okay, but what is pollution actually? Pollution is an undesirable change. It is an undesirable change which actually make a changes in the physical, chemical and biological characteristics. ठीक है, कोई भी जो भी हम चीजें अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, चाहे वो एयर है, इट मे बी लैंड, इट मे बी वाटर, और इट मे बी सॉइल, अगर उसके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस आती हैं, देन इट कैन बी कंसीडर्ड एज pollution. And this pollution, whether it may be air pollution, land pollution, water, or it may be soil pollution, these are caused by certain agents, and these agents which bring these undesirable changes, they are actually known as the pollutants. If they are bringing undesirable changes in the quality of the air, then they are air pollutants. Or if they deteriorate the quality of water, they may be considered as water pollutants. Okay, if they degrade the soil, then they can be considered as the soil pollutants. So what the government of India did in order to control this environmental pollution, or to protect our environment, in the year 1986, it is a one mark question. In the year 1986, one act is passed by our government, that is Government of India, and that is the Environmental Protection Act of 1986. ठीक है बेटे, क्या कहा गया इस एक्ट में? We have to protect and improve the quality of environment. We have to protect and improve the quality of our environment. हमारे environment में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, it may be air, water and soil, हमने क्या करना है? अपना environment जो है उसको protect करना है, उसकी जो quality है उसको improve करना है. We should not cause any kind of pollution. We should not degrade these natural resources.
and we should make judicious use of these natural resources so that they may be available to the future generations. इस चीज को ध्यान में रख के इन द ईयर 1986 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको पास किया. ठीक है बेटे. So here I have shown you some of the pictures that is related with different kind of pollutions. So there may be different kind of industries. ठीक है. और उन इंडस्ट्रीज में से पॉइजनस गैसेस जो हैं उनको बिना वो कहते हैं कि हार्मफुल गैसेस हैं उनको एज इट इज जो है एयर के अंदर जाने दिया जाता है. ठीक है. वी हैव नॉट पुट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ apparatus in the chimneys of the exhaust of our industries. ठीक है. जहां से भी इंडस्ट्रीज का एग्जॉस्ट वगैरह निकलता है चिमनीज में से वहां पे हमने किसी तरह के कोई स्पेसिफिक अडेप्टर्स नहीं लगाए हुए हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट these harmful gases they directly mix in the atmospheric gases, they pollute the atmosphere and they cause various harmful effect on humans as well as other animals. Even they cause some deleterious effect on the plants. ठीक है. प्लांट्स जो है उनके ऊपर भी हमें काफी तरह के इफेक्ट जो है वो नजर आते हैं. As we all of you know very well, we generally use air for respiration. So whenever we respire in such polluted air, then later we may suffering from different kind of respiratory ailments. ठीक है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमें हो जाती हैं, लंग्स से रिलेटेड कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं. ओके बेटे. इसी तरह से वो कहते हैं कि यस बेटे व्हाट हैपन इन केस ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स जो है उनके अंदर हमें जो है प्री मैच्योर एजनिंग सिम्टम्स जो है प्लांट्स के अंदर नजर आने लग जाती है. ठीक है. यस माय वॉइस इज ऑडिबल स्टूडेंट्स. यस मैम. ठीक है. ओके गेट अ मोमेंट. Okay bete. So here I am showing some pictures and that are related with different kind of pollution. So कहते हैं कि water pollution जो है keeps on increasing day by day. ठीक है. हम ये सोचते हैं कि water जो है it can be act as a source for cleaning everything. ठीक है. चाहे आपने सीवेज जो है उसको आपने जो है कहते हैं कि फ्लो करना है उसके लिए आप वाटर यूज कर रहे हैं. फ्लश में हम कितना वाटर यूज कर रहे हैं. ठीक है. वट एवर थिंग यू वॉन्ट टू क्लीन यू यूज वाटर फॉर दैट. सो इन दैट केस वो कहते हैं कि वाटर जो है वाटर बॉडीज जो है हमारे ड्रिंकिंग सोर्सेज हैं दे कीप्स ऑन पोल्यूटिंग डे बाय डे. व्हाट आई एम सेइंग एट दैट टाइम that air pollution not only causes some harmful effect to humans but it also have so many harmful effect in case of plants too. तो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनकी वजह से कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ सेंटर्स होते हैं. ठीक है. जहां से प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो जल्दी जो है स्टॉप हो जाती हैं. तो देयर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ इन द प्लांट्स और द प्लांट इज नॉट प्रॉपर्ली ग्रोइंग. यील्ड जो है क्रॉप्स की वो भी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. प्री मैच्योर डेथ ऑफ द प्लांट्स इट टेक्स प्लेस. So that can be considered as the harmful symptoms that are found in case of plants. तो कहते हैं कि इस तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो पॉल्यूशन की वजह से हमें नजर आते हैं. अब here we are going to discuss about air pollution and how we can control this pollution in detail. Okay bete. So as I have already discussed that we are dependent on air for our respiratory needs. All of us always want clean air for respiration. ठीक है. But what is the thing here that our industries, our factories, they keep on increasing day by day because urbanization is there, and because of that, so many harmful exhaust they comes out from the chimneys of these industries, and these harmful gases they keep on mixing with our atmospheric gases. They pollute our air, and if we respire in this air, which is a polluted one, then what happened? We may later suffer from various types of respiratory ailments. Okay, bete. So these air pollutants they cause injury to living organisms.
They reduce the growth, the yield, and the premature death of the plant. Okay, they cause respiratory, they affect the respiratory system, causing so many respiratory diseases in animals as well as humans. All right. One very important thing here is that the harmful effect of these air pollutants, it generally depends upon the concentration of the pollutants. Okay, that these pollutants, they are present in how much amount, and the person that which comes in contact with these pollutants. ठीक है, जो भी पर्सन इन pollutants के कांटेक्ट में आता है, कितने ड्यूरेशन के लिए उसके कांटेक्ट में आता है, उतना ज्यादा उस पे हार्मफुल इफेक्ट होता है. ओके बेटे, तो देयर आर सो मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आल्सो, स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी. ऑल ऑफ दीज थर्मल पावर प्लांट्स, दीज स्मेल्टर्स, इनमें से स्मोक निकलते हैं, and these smokes, they contain particulate matter. Okay, some of the pollutants, they are gaseous in nature, and these gaseous pollutants, they contain both type of gases. ठीक है, हार्मफुल गैसेस भी हैं उसमें, हार्मलेस गैसेस भी हैं. तो हार्मलेस गैसेस जो है, इट मे बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो कहते हैं कि ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जो कि इन एग्जॉस्ट में से रिलीज होते हैं, these pollutants, they should be separated, they should be filtered out. ठीक है, इनको फिल्टर आउट करना चाहिए, इनको सेपरेट करना चाहिए, ताकि हार्मलेस गैसेस तो हैं, दे शुड सपोज टू बी, ठीक है, मिक्स्ड इन द एनवायरनमेंट के अंदर से. तभी ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जब इनको हमने हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर दिया है, देन ओनली दे गेट मिक्स्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. In their harmful form, they cannot mix into the atmosphere. For this, we have to make so many arrangements. Okay, but later I have discussed that noise pollution, it can also be considered as one of the important form of air pollution. So कहते हैं कि because of industries, ठीक है, the air pollution, it keeps on increasing day by day. So we have to find out the solutions for this. So one of the important solution that we generally used to prevent this air pollution, it can be electrostatic precipitator. ठीक है, क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है एक खास तरह का apparatus है, and this apparatus is generally used to absorb the particulate matter that comes out from the exhaust of the industries or factories. तो कहते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं, वो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, चिमनीज के अंदर इनबिल्ट बनाया जाता है, उनको माउंट किया जाता है. And these electrostatic precipitators, they have the capacity, they have the ability that they can remove 99% particulate matter that is present in the exhaust. So they are generally built in the chimneys of the thermal power plants. तो आपको मालूम है, इंडिया के अंदर thermal power plants, they are the main source of our electricity supply. तो हम thermal power plants को बंद तो नहीं कर सकते हैं, पर कहते हैं कि जो भी एग्जॉस्ट जो है, उसमें से जो हार्मफुल गैसेस आ रही हैं, ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर निकल रहा है, उसको हम क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, इससे पहले कि इट गेट मिक्स्ड विद द एटमॉस्फेयर. एंड फॉर दिस पर्पस वी जनरली माउंट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स विद इन द चिमनीज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. ओके बेटा, हाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इट जनरली वर्क्स? तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड वायर्स. ठीक है, इसकी एक ऐसा apparatus होता है जिसमें इलेक्ट्रोड वायर्स लगी हुई होती हैं, and these electrode wires, they are maintained at several thousand volt. ठीक है, काफी ज्यादा वोल्ट जो है उसके ऊपर इसको मेंटेन किया होता है. एंड वो कहते हैं कि जब ये वर्क करता है तो इट प्रोड्यूस कोरोना. व्हाट इज कोरोना? कोरोना इज क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, काफी सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो चिमनीज में से डस्ट निकलते हैं, they get attached with those dust particles, and in this way the dust particles, they attain the net negative charge. Okay बेटे, later what they do, जो भी कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, they get attracted toward these positively charged plates. तो ये इसके साथ चिपक जाते हैं, और लेटर ऑन जो है वो कहते हैं कि इसको हम कलेक्टिंग प्लेट्स में से, ठीक है, ग्राउंड अप कर देते हैं, यानी उन्हें उसमें से अलग कर लेते हैं. कैसे उन्हें कलेक्टिंग प्लेट्स में से आपने अलग करना है डस्ट पार्टिकल्स को? तो जो कलेक्टिंग प्लेट्स है ना, उनके बीच में वी ब्लो द एयर विद स्लो वेलोसिटी. उसकी वजह से व्हाटएवर नेगेटिव डस्ट पार्टिकल्स दे गेट अटैच्ड विद दीस कलेक्टिंग प्लेट्स, दे लेटर ग्राउंड डाउन, दे फॉल डाउन, एंड इन दिस वे वी कलेक्ट द particulate matter,
and we do not let it mix in the atmosphere. Okay, bete? So here they are using one another apparatus, and that is known as scrubber. What is scrubber? Scrubber एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो कहते हैं कि गैसेस जो एग्जॉस्ट के अंदर जो गैसेस हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक स्प्रे में से पास करते हैं वाटर या लाइम के, और उसमें से वो कहते हैं कि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो उसके अंदर वाटर और लाइम जो है उसी के अंदर रह जाती हैं, और हार्मलेस गैसेस जो हमको अलाउ किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के लिए. ओके बेटे, सी द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि हाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन जनरली वर्क्स. तो यहाँ से डर्टी एयर इट एंटर्स इनटू द apparatus, ठीक है, मे कंटेन्स पार्टिकुलेट मैटर. और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने क्या किया होता है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एंड दिस इलेक्ट्रोड्स दे आर मेंटेन्ड एट हाई वोल्टेज, and later on when they on these electrodes, then they produce cluster of electrons which are negatively charged electrons, and these negatively charged electrons, they later attract the dust particles, and in this way the dust particles also become negatively charged, and they move towards these positively charged electrons, they get attached with these collecting plates. और उसके बाद उन्होंने बहुत ही स्लो स्पीड से एयर ब्लो करनी है, और इन इलेक्ट्रोड्स में से जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉन से कोटेड हैं, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरह से क्लीन एयर जो है उसको पास करने के लिए उससे पहले उन्हें क्या करते हैं, वो स्क्रबर में से पास करते हैं. स्क्रबर जो है उसमें वाटर और लाइम की स्प्रे जो है वो की हुई होती है, तो जो भी छोटे मोटे पार्टिकुलेट मैटर रह जाता है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इन दिस वे क्लीन एयर इट फाइनली पासेस इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके बेटे, so later on we are going to discuss about the causes of the air pollution and what are the measures we can adopt to prevent the air pollution. ठीक है, one of the major cause of the air pollution is the automobiles. ठीक है, before independence से पहले the number of automobiles that are running on the road, they are less in number, but after independence, ठीक है, there is improvement in our financial status. तो उसकी वजह से वो कहता है कि एक टाइम ऐसा था जब ऑटोमोबाइल्स जो हैं, ठीक है, उसमें चाहे हम कार्स की बात कर रहे हैं या कोई भी नॉर्मल आप ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल्स हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, उनका नंबर कम था. पर जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे हर एक पर्सन जो है उसकी अपनी जो है सेपरेट एक कार आ गई हुई है. तो नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बसेस एंड अदर काइंड ऑफ व्हीकल्स विच आर जनरली रनिंग ऑन द रोड, दे कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो उनका नंबर जो है इट इज वेरी मच हाई इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, बट द नंबर ऑफ व्हीकल्स दे आर आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ऑर्डिनरी सिटीज व्हिच आर नॉट द मेट्रो सिटीज. अगर दिल्ली की आप बात करें तो दिल्ली में वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कार्स जो है आपको नजर आती हैं, पर उसके आसपास के जो दूसरे सिटीज है उसमें भी इनका नंबर जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है. ओके बेटे, so what is the special thing here that proper maintenance of these automobiles should be there. ठीक है, तो some of the trucks, some of the buses, they are very old type of vehicles and they are contributing much to the environmental pollution, air pollution. So what is the solution here? कि वो कहता है कि हमें कुछ खास तरह की जो है मेंटेनेंस इन ऑटोमोबाइल्स का जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनका करना चाहिए. ठीक है, यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल शुड बी देयर. ठीक है, लेड फ्री पेट्रोल या डीजल जो है उसको यूज करना है, क्योंकि अगर हम लेड फ्री पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो एमिट होते हैं ऑटोमोबाइल्स जो है उनमें से उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच कैन बी कंसीडर्ड हियर एज द सॉल्यूशन इज कैटालिटिक कन्वर्टर्स. ठीक है बेटे, व्हाट आर दिस कैटालिटिक कन्वर्टर्स? दिस कैटालिटिक कन्वर्टर्स दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइसेस which should be attached with the, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स. और कहते हैं कि इनकी खास बात क्या होती है कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं उसके अंदर जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं मेटल्स, वो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम है, रोडियम है. तो इनको फिट किया जाता है ऑटोमोबाइल से, और इससे जो पॉइजनस गैसेस होती है ना उनका एमिशन जो है वो रिड्यूस होता है. ठीक है बेटे, ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स नॉट ओनली रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ दिस पॉइजनस गैसेस बट समटाइम्स द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, they are coming out from the exhaust of the automobile because of the some old engines that are present in the automobiles.
तो ये क्या करते हैं, इन अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को दे कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर द लेस पॉइजनस गैसेस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसमें से निकल रही है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड अगर है तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन गैस में, और इस तरीके से द हार्मफुल गैसेस दे विल नॉट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसकी जगह पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है अगर वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है देन प्रॉब्लम शुड नॉट बी देयर। ओके बेटे, तो these catalytic converters they should be present in the motor vehicles. They are equipped in the motor vehicle so that they can reduce the harmful poisonous gases to get mixed in the atmosphere. Or one of the very important thing is motor vehicles equipped with the catalytic converter should use unleaded petrol. ठीक है बेटे, इसमें वो कहते हैं कि ऐसे व्हीकल्स जिनमें ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए गए हैं उनमें अनलेडेड पेट्रोल जो है उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल के अंदर लेड प्रेजेंट होगा तो वो इसमें प्रेजेंट जो कैटलिस्ट है, जो प्लेटिनम या रोडियम मेटल्स हैं, उनको ये क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है और इससे कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो अनलेडेड पेट्रोल जो है वो एक तो इंजन की नॉकिंग नहीं करता, नहीं तो अगर लेडेड पेट्रोल जो है उसको यूज करते हैं तो उसकी वजह से इंजन की जो एज होती है वो कम होने लग जाती है और वो जल्दी ही आवाज करने लग जाता है। ओके बेटे, हियर आई हैव शो यू द पिक्चर्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन मीन्स व्हेन वी डंप the unwanted garbage from our houses, from our offices or some other agencies, we throw them directly on the roads. तो क्या होगा, सॉइल जो है उसकी क्वालिटी जो है उसकी वजह से डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, तो these waste they contain some different kind of chemicals. So these chemicals they keep on seeping into the ground. They also deteriorate the quality of the groundwater. और अगर वो कहते हैं कि ये सॉइल के ऊपर ही पड़े रहते हैं तो उसकी वजह से भी some sort of chemical reactions takes place, and because of this foul smell they coming out from that area. So if it is nearby to the residential place, so it is not possible to live near that garbage dump place. ठीक है बेटे, साउंड अलग अलग तरह के जो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन रखते हैं, बहुत ज्यादा है उनका अमाउंट, वो साउंड्स जो हैं जो हमारे ईयर ड्रम्स जो है उनको डैमेज कर सकते हैं, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो कहते हैं कि इस तरह के साउंड्स जो हमारे ईयर्स के लिए अनबियरेबल हैं, इट मे बी वेहिकुलर साउंड्स, इट मे बी द साउंड ऑफ द लाउड स्पीकर्स, ठीक है, जेट एयरप्लेन के साउंड है, या फिर आपके रेजिडेंशियल एरिया के आसपास देयर मे बी सम फैक्ट्री एंड उस फैक्ट्री में से आपको मशीन्स के साउंड्स जो है वो हमेशा सुनते रहते हैं, तो आपकी हियरिंग एबिलिटी जो है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. So that is a long term effect that you may observe. Okay, but in the year 1981, I have already discussed one act is passed by the Indian government, and that is the Air Prevention and Control of Pollution Act. And this act came into force in 1981, but later in the year 1987, an amendment is passed in this act. Okay, and it is revised in 1987, and in this act later noise can also be considered as a air pollutant. उन्होंने कहा कि noise जो है वो भी एक तरह का air pollutant है, air pollution का ही part है. तो how this noise it act as a air pollutant? तो noise is undesired high level of sound. ठीक है, हर तरह की noise जो है उसको नहीं माना गया है pollutant. ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसी नॉइज जो कि अनडिजायरेबल है आपके ईयर्स के लिए, हाई लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती है, and when you come in contact with these loud sounds, ठीक है, बेशक you are using this for some pleasure or some entertainment kind of activities, but they have some harmful effect over your body. They cause a physiological, psychological disorders in humans. And here what I have written, that a brief exposure to this high sound level, that is more than 150 decibel, or the sound that is generally produced by the takeoff jet plane or some rocket. ठीक है, इतना साउंड जो है वो जेट प्लेन या रॉकेट जो है जब टेक ऑफ करता है उस दौरान प्रोड्यूस होता है, अगर उस तरह का साउंड जो है उसके आप कांटेक्ट में आते रहते हैं हमेशा, तो दैट कैन कॉज डैमेज टू योर ईयर ड्रम्स
and in this way you permanently lose your hearing ability. It impairs your hearing ability. Okay, bete? And if there is chronic exposure to a relatively lower noise levels of cities, then it can also permanently damage your hearing abilities. Okay, bete? तो कहते हैं कि if some students they are living in market areas, तो मार्केट एरियाज में वो कहते हैं कि कोई ना कोई फंक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर कोई हॉस्पिटल भी ऐसे एरिया में प्रेजेंट है जो काफी बिजी रहता है, तो उस केस में बेशक स्लोली जो है वो नॉइज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, नॉइज का लेवल बहुत हाई नहीं है, पर हमेशा एक नॉइजी प्लेस में रहने की वजह से भी आपकी हियरिंग एबिलिटीज जो है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. Okay, बेटे, noise also cause various kind of symptoms in your body. ठीक है, तो उसमें one of the major symptom is sleeplessness. आप अच्छे से आराम नहीं कर पाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है. Okay, increased heartbeat should be there if a person is a patient of heart patient is there. So in that case, it can be considered as a critical situation. ठीक है, altered breathing pattern should be there. ठीक है, sometimes some loudspeakers they are playing by some people or some shops, so that may alter the breathing patterns. And these people who are always living in these noisy areas, they always feel stress. तो sleeplessness की condition होने की वजह से वो हमेशा unhealthy महसूस करेंगे. Okay, but reduction of noise in our factories, it can be affected by use of sound absorbent materials. ठीक है, कहता है कि अगर हम फैक्ट्रीज जो है उसमें जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, इट मे बी द नॉइज ऑफ द मशीन्स और सम अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, इट मे बी सम वेहिकुलर साउंड, ठीक है, दैट इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग सम सब्सटेंसेस फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज, सो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल. ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लगाए जाने चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो साउंड है, एक्स्ट्रा साउंड जो है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके. ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड द हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, बिकॉज सो मेनी पेशेंट्स दे आर एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल्स. ठीक है, एट स्कूल्स द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड दे हैव टू लर्न समथिंग, सो इफ नॉइज इज देयर कंसंट्रेशन, ठीक है, दे शुड नॉट गिव द फुल कंसंट्रेशन टू स्टडीज. तो कहते हैं कि जहाँ पे भी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हॉर्न फ्री जोन होने चाहिए. लोगों को टीच किया जाना चाहिए कि दे शुड नॉट मेक यूज ऑफ हॉर्न्स विदाउट एनी नीड. ओके बेटे, परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स ऐसे होने चाहिए. इफ यू आर यूजिंग क्रैकर्स इन सम फेस्टिवल्स, देन दीज क्रैकर्स शुड नॉट प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड. ठीक है, ठीक ठाक साउंड होना चाहिए उनका. लाउड स्पीकर्स इफ यू आर यूजिंग, तो लाउड स्पीकर्स जो है उसका साउंड जो है जिसमें से प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक लेवल पे मेंटेन करके रखिए. ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर टाइमिंग्स. आफ्टर दिस टाइमिंग पीपल शुड फॉलो दैट लाउड स्पीकर्स कैन नॉट बी प्लेड. ठीक है, ऐसा नहीं है आपके घर में जो है कोई मैरिज ओकेजन है या कोई भी सेरेमनी है तो उस केस में आप जोर जोर से लाउड स्पीकर्स बजा रहे हैं एंड यू आर डिस्टर्बिंग योर नेबर्स एंड अदर पीपल्स, so that should not be considered as a desirable effect. Okay, but here I have shown you some pictures that are related with vehicular air pollution in case of Delhi. ठीक है, तो this case study we are going to discuss later. तो आप देख सकते हैं in the first picture, ठीक है, कितनी cars हैं. तो roads जो हैं वो कहते हैं कि काफी टाइम तक there can be situation of traffic jam in case of Delhi. So people cannot reach their places, their offices, on their jobs on appropriate time. ठीक है, तो पहले वो कहते हैं कि old vehicles they are running on the roads and these old vehicles they are producing so many poisonous gases. ठीक है, because वो कहते हैं कि इन old vehicles के अंदर कोई catalytic converters नहीं लगाए गए हैं और ये पेट्रोल या डीजल बेस्ड बसेस हैं. तो because of this, what is the situation कि पेट्रोल एंड डीजल जो है उसमें से अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज इनमें किसी तरह का कोई ऐसा एपरेटस नहीं है. उसकी वजह से वो कहता है कि एयर पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गया था एक लेवल पे. और दिल्ली जो है वो 1990s की बात है, दिल्ली जो है वो जो 41 पॉल्यूटेड सिटीज थे वर्ल्ड के उसमें 4th नंबर पे आ गया था. तो लेटर ऑन सम गाइडलाइंस दे आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आफ्टर सक्सेसफुली फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस, दिल्ली जो है उसमें एयर पोल्यूशन, वेहिकुलर एयर पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस किया गया. क्या वो गाइडलाइंस थी, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. ओके बेटे,
Okay, this is clear to all of you. So we have completed up to page number 272. आज आप यहाँ तक पढ़ लेंगे, कल हम केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटे, केस स्टडी पे हमने ध्यान देना है, इतना इजी नहीं है. तो whatever I am going to teach you tomorrow, that is the case study that how vehicular air pollution is a major concern. और किस तरह से जो दिल्ली है वो एक टाइम पे एक पॉल्यूटेड सिटी जो है वो बन गया था इंडिया का, एंड कौन सी